So thank you very much, all of you. शाहिदुल आलम साहब आपसे उर्दू में सवाल करेंगे, आप जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल में उसे आप जवाब दे सकते हैं। तो अब ये बताइए, ये जो नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस साहब की जो हुकूमत है, इंटरम कह दें, केयर टेकर गवर्नमेंट कह लें, क्या ये कामयाब रही है? उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि जो अब आपके इलेक्शंस होने वाले हैं वो फ्री और फेयर हों, एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया है? पहले जो मैं बताना था, जो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है ना, इट केम आउट ऑफ क्राइसिस, इट वाज नॉट नॉर्मल। उसमें जो हुआ था, लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड। वी हैड 12 इलेक्शन हुआ, उसमें 4 अंडर केयर टेकर गवर्नमेंट, 8 अंडर इनकम्बेंट गवर्नमेंट। 8 अंडर इनकम्बेंट गवर्नमेंट गया, इनकम्बेंट ने लिए, और जो केयर टेकर गवर्नमेंट हुआ अंडर केयर टेकर गवर्नमेंट हुआ, वो सब गया ऑपोजिशन को। सो द इक्वेशन इज वेरी स्पेसिफिक। इफ यू आर इन गवर्नमेंट, इफ यू वांट टू बी रिइलेक्टेड, you cannot have a caretaker government. The only way to ensure you get re-elected is to conduct your own elections. That is the history of Bangladesh. Of 12 elections, 4 under caretaker have gone to opposition, 8 under incumbent have gone to incumbent. So obviously, when Hasina came into power, though she had campaigned for the caretaker government herself, decided she wanted to change the rules. Caretaker government hone se to wo wapas nahi aayega. So she changed it. Now we've got a situation where we have, technically, I must also say, we are not a caretaker government, it's an interim government. Because the caretaker government has a very tight mandate. Its only mandate is to hold fair and fair election. It also has a tight tenure, 3 months. In practice, हमारा जो हुआ, एक caretaker government 2 साल रह गया. And this time it was an interim government. The other difference is, once it was, a constitution was amended to allow the caretaker government to form and function. No amendment was made for the interim government. The interim government does not exist in the constitutional form. So a lot of the debate has been that when the interim government swore, the swearing in took place, they did it under the old constitution, which itself the revolution denies or questions. So coming back to your question, now the things we have to do in order to have a fair and free election, one is not to have violence. There's been, I think, 36 deaths in the pre-election period just recently since the campaigning began. So that's certainly not true. The other things that are being questioned is, you want a level playing field. The opposition obviously want a level playing field. 3 of the people of NCP, the Students' Party, were in government. 2 of them until very recently. So if you're in government and then when you leave you become part of one of the parties, then obviously there's a problem in terms of there being a level playing field. The other thing is, I mean, if I look at the things that they were going to do, then one of the things they were required to do is to have a law and order situation which is conducive, and that certainly has not taken place. So in my analysis, the caretaker government, the interim government, has largely failed in those key areas it was meant to deliver upon. Well, let me ask you then the next question. You're going into an election and one of your main political parties, the Awami League, is banned. Again, a very pertinent point. Now, technically, the government will say the Awami League is not banned, but I think it's a matter of semantics. Their political activity is banned. So it results in the same thing. And certainly this is one of the largest political parties which is not allowed to contest in the elections. The argument they make is that this is a party that was involved in
war crimes essentially, crimes against humanity. A lot of people were killed, and it was terrible. I mean, you had military shooting children from helicopters, so it was a horrendous situation. But I don't personally believe that the answer is in this manner, and sadly, I think what has also happened as a result of this is that the Army League is able to play the victim card. In the end, should the people decide, and if the party has done terrible things, which it did, then the people through its mandate could actually decide. But that opportunity was not given. So it's hugely problematic in my opinion. Well, thank you for that. Babar साहब, very familiar ना कि एक पार्टी को बैन कर दिया, तो आपको याद होगा पिछले इलेक्शन के अंदर एक पार्टी के सिंबल को बैन कर दिया गया था. आप समझते हैं कि वो एक सही फैसला था, और क्या उसके नतीजे में जो इलेक्शन हुआ उससे ये नतीजे जो थे यही निकलने थे? आप उसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हमारा जो ओरिजिनल आइन था 1973 का, उसमें केयर टेकर की गुंजाइश नहीं रखी गई, और यही वजह है कि 1977 के इंतखाबात में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ही वज़ीर आज़म थे जो इंतखाबात हुए थे दोबारा जो हो रहे थे. हावेवर उसके बाद ये आवाज़ उठाई गई कि हाँ केयर टेकर होना चाहिए. ज़ियाउल हक़ के दौर में उन्होंने जब आइन बहाल किया 1985 में, तो उन्होंने केयर टेकर इस बुनियाद पर डाला कि ये इंतखाबात के वक्त एक गैर सियासी और गैर जानिबदार हुकूमत होनी चाहिए. लेकिन उसका पर्पस एक्चुअली गैर सियासी और गैर जानिबदार हुकूमत नहीं था. ही वांटेड टू परपेचुएट हिज रूल, क्योंकि उसके आइन में जो डाला था वो ये था कि केयर टेकर हुकूमत का इंतखाब सदर पाकिस्तान असम्बली बर्खास्त करने के बाद ख़ुद अपनी सवाबदीद में करेगा. चुनांचे जब उसने जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ किया, तो जो केयर टेकर काबीना बनाई, वो केयर टेकर काबीना बग़ैर प्राइम मिनिस्टर के बनाई, क्योंकि उसने देखा कि जुनेजो जो था वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी जा रहा था. सो वी मस्ट रिमेंबर that the caretaker set up in Pakistan was introduced in the name of having a neutral caretaker government to ensure free and fair elections. लेकिन इब्तिदा इसकी एक जर्नैल ने डाली, डिक्टेटर ने डाली, जिसका मकसद ये था कि वो ख़ुद अपने आप को परपेचुएट करे. लेकिन ये बहस चलती रही, और फिर पाकिस्तान में जब ये 18वीं तरमीम आ गई ये हो, तो उसके बाद ये फार्मलाइज़ किया गया कि केयर टेकर कैसे बनेगा. ये फार्मलाइज़ हुआ कि केयर टेकर सवाबदीद से नहीं बनेगा, बल्कि लीडर ऑफ द पोजीशन और लीडर ऑफ द हाउस मिल के बात करेंगे. अगर वो किसी फ़ैसले पर न पहुँचे तो फिर वो दे विल गो टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, और पार्लियामेंट्री कमेटी भी अगर फ़ैसले पर न पहुँचे तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 दिन के अंदर फ़ैसला करेगा. तो ये था जो मुनीर, जो आपने सवाल किया, हमारा एक बुनियादी जो फ़्लॉ रहा है केयर टेकर में, बुनियादी फ़्लॉ ये है कि हम ये समझते हैं कि जो न्यूट्रल, जो जिनको हम कहते हैं नॉन पॉलिटिकल, उनको अगर हम केयर टेकर वज़ीर आज़म और वज़रा बनाएं तो शायद वो न्यूट्रल भी होंगे. दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. ए नॉन पॉलिटिकल सेटअप may not necessarily be a neutral setup, and this is what has happened in Pakistan. इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर आपने no matter howsoever non-political the setup may be, it will not be neutral. But I think yes, the caretaker setup is needed in Pakistan, but it needs to be massively reformed in order to ensure that the caretaker setup is not merely non-political, it is also really neutral. और उसके लिए चंद तजावीज़ में फिर पेश कर सकता हूँ.
but I believe that yes, caretakers are needed, अच्छा, but we need reformation in the caretaker setup. Thank you.